Friends, a warm welcome to all of you in our forum of light language meditation. मी सुषमा सराफ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, आज मैं अपने बारे में मेरा एक्सपीरियंस इस यात्रा में कैसा रहा। बहुत से लोगों का हमेशा प्रश्न रहता है लाइट लैंग्वेज क्या है, आप कैसे बोलने लगे, तो कुछ इसी के बारे में आज बचपन से ही अगर आप देखेंगे तो आई वॉज लाइक अ वेरी शाय चाइल्ड। मैं बहुत ही इंट्रोवर्ट जैसी थी और मेरी फैमिली बहुत रिलीजियस थी, तो हमारे घर में बहुत पूजा पाठ होता था और मेरा बहुत इंक्लिनेशन भी था उसकी तरफ। मैं भी बहुत छोटे से मुझे याद है मैं रोज पूजा करती थी। एंड दैट्स स्लोली एंड ग्रेजुअली आई स्टार्ट ग्रोइंग अप, जैसे बहुत सारे बिलीफ सिस्टम्स और बहुत सारे थॉट पैटर्न्स और हमारे इमोशनल पैटर्न्स के साथ साथ मैं भी बड़ी होने लगी। जीवन की यात्रा में बहुत सारी चीजें ऐसी भी पिक करी जो धारणाएं मेरे काम की नहीं थी, जो मुझे लगा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। फिर भी लाइफ चलती रही और मेरी शादी भी हो गई एंड आई मैरिड अ गाय जिसे मैं पसंद करती थी, मैं प्यार करती थी। देन आफ्टर द मैरिज लगता है कि उसके साथ कुछ अचानक से नया हो गया, तो आई ऑल्सो फेल द सेम। बट स्लोली एंड ग्रेजुअली इन माई लाइफ जर्नी आई फेल कि जितने भी हमारे रिलेशनशिप्स जो भी हमारी जिंदगी में मैंने शादी के बाद चुने, बहुत कुछ मुझे सिखा के गए जो आज मैं बनी। बहुत बड़ा उनका योगदान रहा मेरे जीवन में। एक बहुत ही अच्छी फैमिली भी मिली मुझे, जिसमें माय मदर इन लॉ एंड माय हस्बैंड रियली प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड द ब्रिलियंट रोल आई विल से। मुझे माँ की तरफ से, मतलब मेरी मदर इन लॉ की तरफ से हमेशा बहुत सपोर्ट रहा, बहुत उनका बहुत बड़ा योगदान है जहाँ पे मैं हूँ आज। क्योंकि जब मेरी स्पिरिचुअल जर्नी बिगन हुई, इस एक ऑफिशियल टर्म्स में आप अगर बोलोगे 2008 से, तो मेरे बच्चे बहुत छोटे थे। However, coming into the spirituality begins with my daughter's birth. जब मेरी पहली डॉटर आई गेट प्रेग्नेंट, जब मैं फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट थी, तो मेरी लाइफ में सत्संग खुला। आई एंटर्ड इनटू दादाज भगवान सत्संग और मेरे को वहां पे जाना बहुत अच्छा लगने लगा, क्योंकि बहुत सारी मेरी धारणाएं टूटने लगी। जो बिलीफ सिस्टम्स पे थे जो काम के नहीं थे वो छूट गए। हर एक चीज जिंदगी के प्रति एक नया नजरिया दिखने लग गया, पॉजिटिविटी दिखने लग गई लाइफ में। खुद के लिए जो मन में इतने दुविधा थे, इतनी डाउट्स थी, इतने कंप्लेंट्स थे, कुछ कुछ धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी स्लेट सफा होने लगी। फिर 2007 में जब मैं सेकेंड टाइम प्रेग्नेंट थी, तो मेरी लाइफ में एक नया मूड आया। तब मुझे लगता था कि जो भी मेरा सेकेंड चाइल्ड होगा वो डिसेबल्ड होगा। ये थॉट मैंने कहाँ से पिक किया आई डोंट नो, लेकिन मैं बहुत ही फेयरफुल हो गई ये क्या होगा। एंड सेकेंड चाइल्ड, क्योंकि एवरीबडी वाज एक्सपेक्टिंग अ बॉय चाइल्ड एज इन अ मारवाड़ी फैमिली, मेरे को भी लग रहा था कि लड़का हो जाए। बट समहाउ आई फेल कि अगर बॉय चाइल्ड हुआ तो डिसेबल्ड चाइल्ड ही होगा वो। आई मे बी एक डीप नोइंगनेस थी मेरी या फियर था, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ऐसा बहुत अंदर तक लगता था। तो मैं भगवान से प्रार्थना करती, आई डोंट नीड अ बॉय चाइल्ड, आप एक लड़की देना लेकिन हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग। सो समहाउ द लाइफ कंटिन्यूज। मैं उस फियर में रहने लगी एंड आई मेट अ लेडी, बबीता केजरीवाल करके हैं वो। शी इज माय फर्स्ट गुरु, शी इज माय फर्स्ट मेंटर ऑफ मेडिटेशन आई वुड से। उन्होंने मुझे योगानंद जी का होंग शॉ करके मेडिटेशन था वो सिखाया, और उन्होंने शी हैज अ स्पेशलिटी कि वो बच्चों से बात कर सकती हैं जब बच्चे वुम्ब में होते हैं, गर्भ में होते हैं। तो मेरे को जब उनका पता चला तो आई फेल्ट सो फैसिनेटेड फर्स्ट, और मुझे लगा यार ये तो बहुत ही आसान है, वो मुझे बता देंगे कि मेरा बच्चा ठीक है कि नहीं। दैट वाज द ओनली रीजन आई मेट हर। और जब मैं उनसे मिली तो वो उन्होंने बोला योर चाइल्ड इज फाइन सुषमा। तो मैंने कहा फिजिकली भी फाइन है, आई जस्ट वांट टू कंफर्म रीकंफर्म अगेन। तो वो बोले कि ऐसे नहीं बता सकती फिजिकली फाइन है, लेकिन योर चाइल्ड सेज दैट ही और शी whomsoever it is fine।
लेकिन मैंने उनको जब बताया अपने फियर के बारे में, तो उन्होंने बोला यू स्टार्ट डूइंग मेडिटेशन, एंड दैट्स हाउ माय मेडिटेशन जर्नी बिगेन्स विद Hongshu. She was my first spiritual mentor, and she is very dear to me, and I still in touch with her. मैं अभी भी उनसे बहुत बात करती हूँ. फिर I gave a birth to my second daughter, एंड उस वक्त मैं थोड़ा नाराज हो गई भगवान से कि एक चीज मांगी थी फिर भी नहीं दी. इसलिए हम होते हैं छोटे बच्चे की तरह, मैं भी हो गई. मुझे लगा आप कोई फायदा नहीं है. At that time, my husband really plays a very beautiful role in my life. He told कि सुषमा, तुम्हारा ये नाराज होना अच्छा बात नहीं है. उस परमात्मा ने तुम्हें कुछ दिया है, तुमसे कुछ लिया नहीं. Then how can you be so selfish? है ना, तुम इतनी खुदगर्ज कैसे हो सकती हो? तुम नाराज हो जब तुम्हें कुछ मिला है. कुछ लिया होता तो भी नाराजगी समझ में आती. And maybe that statement of him really changed my perspective towards God. उस परमात्मा के प्रति मेरा नजरिया बदल दिया. मुझे लगा सच में दिया तो इतना कुछ. And I started crying. I said, feel so overwhelmed with this statement. कि फिर हमेशा दिया अभी तक. फिर I started, that healing happens for me at that moment. That pain which I was carrying had dissolved. Then suddenly I get enrolled in a course called pranic healing, just like this only. It's not like I was in some major illness or something, or कोई घर पे कुछ बड़ा प्रॉब्लम था. Nothing. It's just like I just landed there, if you say. And when I went there, मैंने जब उसके बारे में सुना था, मुझे लगता भी था कि कोई एनर्जी से कैसे ठीक हो सकता है, because as per my belief system, when you are ill, you have to take medicines. Although I began my journey, and it's just like the beginning of my spiritual path. And I really get intoxicated. ऐसे लगा जैसे कोई मुझे नशा हो गया उसका. उस वक्त मेरे बच्चे बहुत छोटे थे. छोटी वाली बेटी सिर्फ 4 महीने की थी और बड़ी वाली 4 साल की. और उस वक्त मेरी मदर इन लॉ ने मुझे बहुत सपोर्ट. उन्होंने कभी नहीं रोका मेरे को कि मैं कोई क्लासेस के लिए जा रही हूँ. सुबह जाती थी, रात तक आती थी. लेकिन शी नेवर सेड कि क्यों जाना है, घर का काम रहता है, इतना बच्चे हैं, जो भी whatsoever, never. She really allowed me. फिर मैं जब वहाँ, as I began my journey, then मैं प्राणिक हीलिंग से जुड़ गई. वहाँ पे I started working as a healer also. मेरे को वहाँ पे जो मेंटर जिनसे, दुर्गा बांका, जिनसे हमने सीखा था, she liked my work and she invited me to join her center, healing center. I started working there, going twice a week. और उस यात्रा में मैं जो भी मिलता था, मुझे बस सीखना होता था. इतना एक सीखने का नशा जैसा हो गया मुझे. कोई भी मास्टर आ रहा है, इस बारे में हो रहा है क्लास, मुझे सीखना. चाहे मैं उस सब्जेक्ट के बारे में जानती हूँ या नहीं जानती, जस्ट फेल्ट लाइक लर्निंग. एंड आई यूज्ड टू एनरोल फॉर एवरी कोर्स आई कम अक्रॉस. चाहे वो पास्ट लाइफ हो, फिर चाहे EMF हो, सिल्वा माइंड कंट्रोल हो, थीटा हीलिंग है, प्राणिक हीलिंग है, हर कुछ मैंने अब यूज करूंगी, उसका क्या यूज रहेगा नहीं रहेगा, कुछ थॉट नहीं, कोई प्लानिंग नहीं, कुछ नहीं. बस मुझे सीखना है. आई वॉन्ट टू नो कि क्या है ये, कैसे है, हु एम आई. इतने तरह के मैं सब करती गई. एंड 2012-13 में फिर बीच में मैं PSSM से भी जुड़ी. मैंने उनके लिए मेडिटेशन क्लासेस भी लेना शुरू किया, स्लोली एंड ग्रेजुअली. 2012 and 13 से my life took a change. And suddenly every problem start cropping up in my life. हमारा बिजनेस पूरा शट डाउन हो गया. मैं फिजिकली बहुत बीमार रहने लग गई. इट्स लाइक खड़ी हुई हूँ और मैं गिर जाती थी. इट्स जस्ट लाइक माय ब्लड प्रेशर यूज्ड टू ड्रॉप लाइक दैट. जस्ट खड़ी हूँ एंड आई विल फॉल डाउन. मुझे एलोपेशिया हो गया. आई स्टार्ट लूजिंग ऑल माय हेयर्स. बड़े बड़े पैचेस बनने लग गए. एंड रिलेशनशिप मेरे खराब हो गए मेरे हस्बैंड के साथ. कुछ इट्स लाइक कुछ मेजर नहीं था तब भी, पता नहीं, समथिंग डिडंट वेंट वेरी वेल. कुछ एक गैप आ गया हम दोनों के बीच में. तो मुझे लगा सब कुछ जगह से ही क्या हो गया. एंड आई डिडंट गेट एनीथिंग 2013. एंड आई वाज स्ट्राइविंग सो हार्ड कि कैसे सब ठीक होगा. सब लोग कहते हैं ध्यान करने से सब अच्छा होता है.
मैं तो ध्यान में आने के बाद मुझे लगता है सब खराब हो गया मेरी जिंदगी में, उससे पहले सब ठीक ही लग रहा था, आई स्टार्ट डाउटिंग। लेकिन एक इनर वॉइस इनसाइड मी जस्ट कीप्स ऑन टेलिंग मी, डोंट लीव योर प्रैक्टिस, डोंट लीव योर मेडिटेशन, ध्यान नहीं छोड़ना है, करते रहना है, जो तुम कर रही हो करती जाओ, जो तुम कर रही हो करती जाओ। और वो आवाज मैंने सुनी, मुझे विश्वास नहीं हो रहा था ध्यान करने पे, तभी मैं ध्यान करती रही। मैं सर्विस करती थी, मुझे लगता था सब सर्विस करने से अच्छा होता है, लेकिन कुछ ठीक नहीं हो रहा था, तब भी मैं करती रही। आई कंटिन्यू, आई जस्ट लिसन टू माय इनर वॉइस, वट एवर आई वाज डूइंग आई केप्ट ऑन डूइंग 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 डूइंग। एंड इन दैट जर्नी आई मेट ब्यूटीफुल मास्टर। मैं उस समय बैंगलोर भी जाती थी, वहां पे मैंने जब फर्स्ट टाइम जूदी सतोरी को लाइट लैंग्वेज के बोलते हुए देखा था, और मुझे लगा ये दूसरी यूनिवर्स की भाषा बोलती है, इट्स लाइक सो अमेजिंग। लेकिन फिर तो ये बहुत सारा मेडिटेशन करती हूँ, द फर्स्ट थॉट विच कम टू माई माइंड की तो बहुत सारा मेडिटेशन करती होगी, बहुत घंटे, और मैं तो इतनी देर करती नहीं हूँ, हार्डली एन आवर आई डू। इनिशियली इन द इनिशियल डेज ऑफ माई प्रैक्टिस, जब मैं नई नई आई थी, मैं तो घड़ी देखती थी, अच्छा अभी 10 ही मिनट हुआ है, अभी 15 मिनट ही हुआ है। तो इट्स लाइक ये तो बहुत, इनके जैसे बनने के लिए तो वी नीड टू डू लॉट ऑफ तपस्या। दैट वाज माय थॉट व्हेन आई फर्स्ट सॉ जूदी सतोरी स्पीकिंग द लाइट लैंग्वेज। However, it went. I heard her in maybe in the year 2011 or 12 something. फिर मैं भूल गई उस एपिसोड को, खैर। फिर शी केम्स टू कैलकाटा, जूदी सतोरी कैलकाटा आई थी, और मैं उनके वर्कशॉप में गई थी, 2013 का ही बात है ये। एंड एट दैट मोमेंट आई वॉज रियली इल, 13 दिसंबर के आसपास का बात है जब वो कैलकाटा आई थी। एंड एट दैट मोमेंट आई वॉज रियली इल, एंड द ओनली थिंग विच इज ऑन माई माइंड, आई वॉन्ट टू हील माई सेल्फ। जो मुझे ये इतना मेरा ब्लड प्रेशर का इतना मुझे प्रॉब्लम हो रहा है, एंड माई हेयर्स आर, आई एम लूजिंग एवरीथिंग, तो हाउ शुड आई प्रोसीड इन माई लाइफ। when I talked to her personally, and when she connected to spirits, to her guides, मैंने उनको बोला, तो she told me one thing only, कि you are not ill सुषमा, and just a statement, nothing else। उसके अलावा उन्होंने ना आगे बोला ना कुछ पीछे बोला। और मुझे लगा यार मैं बीमार हूँ, मैं दिख रही हूँ, और ये बोल रहे मैं बीमार नहीं हूँ। सो बिकॉज देयर वाज सो मच, टाइम बहुत कम था उस वक्त जब हम लोगों की मीटिंग हुई थी, तो और कोई भी दूसरी बात एक्सचेंज नहीं हुई। ओके, आई फेल्ट कि मे बी सेइंग आई एम नॉट इल इज फाइन, बट आई एम फीलिंग आई लेफ्ट, मतलब वहां पे ठीक है, वर्कशॉप खत्म हुआ, एंड अगेन वी गेट बिजी इन आवर लाइफ। 2015 was a challenging year, was a transformative year for me, not a challenge, transformation year for me. In the year 2015, I went to Bangalore in the program called Global Conference of Spiritual Scientists. And in वहाँ पर अलग अलग देश के अलग अलग मास्टर्स आते हैं टू टेक द सेशंस, टू टेक द क्लासेस, और मैं वहाँ पे थी, एंड आई वाज इन अ डीएनए क्लास ऑफ मास्टर रे चंद्रन फ्रॉम जापान। I was in her class. It was at night, 9 p.m. at night. After dinner, we went to the pyramid, the big pyramid in the Bangalore. And he started toning some sounds. As he started toning, I just get transmuted into the another reality. मुझे कभी भी मेडिटेशन में इतना एक्सपीरियंसेस नहीं होते हैं। आई एम लाइक आई जस्ट फील द एनर्जी, मुझे कभी इतना मूवमेंट नहीं और कुछ नहीं, जस्ट सिंपल में मेडिटेशन बहुत काम एंड स्टिल होता है। लेकिन उसी मेरी बॉडी में इतने जर्क्स, इतना मूवमेंट, मेरा हाथ कहाँ है, मेरा पैर कहाँ है, जस्ट नो आइडिया, आई डोंट हैव। However, the process got completed, and during the entire toning, I was like just this I was just speaking something, nothing, no sense, nothing, no meaning. I was just whispering something, although the process got completed. And when I met towards the end, I met Ray sir and told this was happening to me. And suddenly, as I shared, I was blabbering in between, and there was lots of movement in my body. Suddenly, as if I feel a strong pull in my body, as something has really pulled me, and I just lost control over my physical. I just lost entire control over मेरी physical body पे मेरा कोई control ही नहीं रहा, as if I just become a puppet in somebody's hand. मैं कोई मुझे पूरी तरह से rule कर रहा है मेरी body को. And I continuously, my eyes were like up. It's like just like climbing up, and I was continuously speaking something.
that what you call right now is light language. I just speaking non-stop. I couldn't open my eyes. I can't come to my awareness. I can't come back to that consciousness, and I can't stop that language also. I have lost control, complete control over my body. And I was there in that pyramid for, after the program, I have that support system there. Many people were there surrounding me. They were just trying their best to come back, support me to come back to this reality so I can be grounded. They just make me, support me to hold those stones. They applied the oils, some oils, essential oils, which will support me to come back to this reality. And they chant few mantras and everything what they ever can do, including research. They just built a like a very, although I lost my voice at that moment. I couldn't speak. Like as I'm talking now, मेरी आवाज चली गई, मैं बात नहीं कर. And I couldn't sleep also. मैंने सोई नहीं पूरी रात. I was just like loitering here and there in that campus of Pyramid Valley. I went to my dormitory and I rested there. वहाँ पे मुझे छोड़ के आए मेरे friends. मैं थोड़ी देर रुकी, लेकिन मैं सुबह फिर बाहर ही बैठी रही. Neither I was speaking, neither I felt like eating or talking to somebody. कुछ भी नहीं. So in the morning, I felt a bit better, and I felt maybe instead of sitting in the dormitory, I go to the pyramid only. I sit in the pyramid itself. Again, I get ready and I went back to the pyramid. As soon as I sit in the pyramid, after sitting for a few minutes, or maybe half an hour or not more than that, I start again feeling that uneasiness जो मुझे कल पहले दिन previous day हो रहा था. So I felt I should come out of the pyramid. Otherwise, मुझे कल के जैसे होने लगेगा. That's what I felt. I immediately left the pyramid. मैं वापस निकल गई pyramid से, क्योंकि that was really intense the previous day. I don't want to experience. मुझे इतना दर्द था, और it was like very painful also. But the like a combination, if you say, कि बहुत शांति भी थी, लेकिन दर्द भी था. It was like very unusual. So I felt it would be too intense again for me to like everybody surrounding me and watching me, and I become so helpless. And it was so deep. I just come out of the pyramid once again, and I just saw Racer again. And maybe I felt that maybe I talked to him. I just asked him, what has happened to me actually? क्या हुआ है मेरे को? क्योंकि, and because it happened in his workshop, so maybe I felt he will be the only one who can guide me better. So he was busy with someone, so he asked me to sit in library, and he will going to attend me after some time. Okay, fine. I went to the library, which is under the pyramid only. And as soon as I sit there again, I lost control over my body. फिर से मेरा control मेरी शरीर के ऊपर से चला गया. Again, I just making several mudras and behaving like maybe like a snake. My body is just like swinging like just like swirling like a snake, making sound like those snake, and it would just become so intense that I am. If you will ask me to make those postures and mudras right now, तो मैं शायद अब कर ही नहीं पाऊँ. You know, it was just like so spontaneous at that moment. It was just happening. हो रहा था अपने आप. And suddenly, then when the people they saw me around, and it's just like everybody surrounds me again. But I wasn't aware of anybody, what they are thinking about me. It's just like all the thoughts have taken a lead from my energy. I was in such a flow of that in that intense flow of energy. I just feel so connected to that consciousness at that moment that I felt that everything has become one. सब कुछ एक हो गया है, कुछ अलग नहीं है, सब एक. I become so open at that moment. And later on, we come to understand, we come to know that it was a deep Kundalini experience for me. And after that awakening, after that, approximately that process lasts for 2 hours. And then after that, I slept.
my body really get very tired, and I slept another for maybe how many hours, I don't know, but I slept. Then again, when I wake up, then I feel that everything has become one. Now there is no difference in anything. All the trees are same. Me and I'm seeing everybody. I feel everything, everybody has that same consciousness, that same energy. अलग ही नहीं है किसी में भी, सब एक ही है. And that was so beautiful, beautiful. I can't explain in words, friends. However, I lost my appetite. I don't feel like eating anything. I just can't go to the cafeteria area. And I don't feel very comfortable going very much close to the people, because as soon as I enter their auric field, I start feeling that maybe a bit of discomfort because of their whatever it is, I don't know. But I felt I want to be in solitude. I want to be alone. And I'm enjoying that, being with myself. And suddenly I started drawing so many things. I take a canvas, I take a copy, and I just used to draw so many images, which we call the cosmic diagram, which I have shared in my website also. I have drawn many. So after that, we stayed there. The programs continues for the Pyramid Valley, but I never went to the pyramid for attending the program. I don't feel like. I just used to sit outside, so looking around the nature, being in silence, doing nothing. Neither I used to talk with anybody, neither I used to eat, nothing, just simple. And then when I came back, this new reality of speaking the light language opened up for me. Then I started channeling many masters. Initially, it's like anytime in the night, I just feel that somebody is like shaking me and ask me to wake up. Midnight, 2 o'clock, 2:30, 3 o'clock. And suddenly I used to wake up in the night. I used to keep my books beside me, my diary beside me. And in the middle of the night, I used to wake up and I used to write the messages. I used to draw. And there were few restrictions on my diet happened at that moment, not to eat everything, not to eat oily food and spicy food, and not to go in the public much. For a month, I need to practice those, what you say, certain rules, so that my energy get integrated. And then I started speaking light language very fluently. Initially, I couldn't control. I couldn't stop and get started, but slowly and gradually, as I started practicing, as I become more grounded in my reality, in this earth reality, I was able to use it in a more better way. So slowly and then again, my journey continues. I started sharing, I started learning with many masters. After this, so much happened also in life, something maybe needed so that I can move to the next level of my evolution. I just, maybe sometime I will share this, but not now. So after that, when I started sharing, then a thought comes to me, let's start my work. Let's complete my purpose. Let's complete the work for which I am here to do. Then I inaugurated the forum, opened the forum in the 2 years back, 2021, on the Buddha Purnima day with the light language meditation. And we launched this forum on 2021 on Buddha Purnima day. The only vision which I had in my mind is just like, I want to consolidate. This is a beautiful tagline given to us by the mentor Nalini Aunty, which really describes my work. That I want to consolidate the ancient wisdom with the new age tools. The new age tools may be like the cosmic diagrams, the light language which we speak, becoming more aware of how to do and let go of those patterns and heal those emotional wounds. At the same time, I feel that awareness is the only key to freedom. I feel it's the only, I have
if one line, if I will say to describe spirituality in one line, is awareness is the key to freedom. अगर हम सुजाग हैं तो we can do everything in our life. At the same time, we know how to do everything. हमें पता भी होगा, हम फिर गलत नहीं करेंगे. So awareness, that's all, that only that awareness is needed. If I'm aware of my anger, if I'm aware of my jealousy, if I am aware of my fears, if I am aware of my insecurities, तब हम काम कर पाएंगे. लेकिन अगर हमें पता ही नहीं होगा कि ये सब है तो हम काम भी कैसे करेंगे, हम मुक्त भी कैसे होंगे. So for me, freedom means is awareness. So I opened this forum and then I started sharing my work. I started running the program Journey Towards Self-Introspection before the light language meditation this forum comes into existence. Before that, I have launched that program. And from there, I have got those beautiful gems, which you see in our forum right now. Maybe it's Hiral, Nidhi ji, Nalini auntie, Lekha ji, all of them are the people who have attended the JTSI program. They have come, they groomed their life after JTSI, the road to self-mastery, and they started teaching. So this is, I felt, become one of the main purpose of my life. If I'm sharing something, if you learn something, it's always, the next step is that you must teach also. जब आपने सीख लिया है, तब आपको सिखाना भी है. So this is the next, that's why I continued with those programs. And when people get ready from that program, they become ready to share also, to teach also. That's the only purpose I have right now in my life, to continue the work which I have started with that deep faith and knowingness that universe is always there to support us. Universe is always there to support us. Sometimes maybe in journey of life, we lost, maybe our trust gets shaken और हमें लगता है कि अरे कैसे होगा, it's doubt. So let's understand it's life. जैसे समंदर में लहरें उठती हैं और फिर मर्ज खो जाती हैं, वैसे ही ये विचार है. Let's become a witness to our thoughts also. ठीक है, कोई बात नहीं, ये आया है. Let's serve our emotions. Let's serve our thoughts. Let's learn that art. So this is just a few, just short, my story which I shared in my journey of life. Friends, I will say in everybody's journey, there are always ups and downs. कभी आपको हमेशा कभी confusion लगेगा, कभी आपको लगेगा रे मेरे से नहीं होगा, कभी आपको लगेगा रे मैंने सब कर लिया. लेकिन कहीं भी रुकना नहीं, कहीं भी रुकना नहीं. We just need to move forward. बढ़ते ही जाना है. कोई भी आए, कभी भी मन करे, अपने विश्वास को नहीं खोना है. जैसे 2013 में मेरे साथ हुआ. I just didn't allow that what we call the dark night of the soul to just lost my trust in the spiritual practices, and I continued. Similarly, 2019-20 में भी कुछ ऐसा हुआ मेरी लाइफ में, 19-20-21. फिर मुझे लगा यार कोई मतलब नहीं है इन सब चीजों का. Why I am doing? कोई फायदा नहीं है. If this is spirituality, then what's the purpose? What's the need of practicing? क्यों करना है ये सब? लेकिन then too, a voice inside tell me कि नहीं, continue with your work. Continue. Don't lose hope. Don't lose faith in the divine. तो मैं यही बोलूंगी फ्रेंड्स कि उस कॉन्शियसनेस में हमारा विश्वास नहीं डगमगाना चाहिए. कुछ भी कितना भी बड़ा हो जाए, उस परमात्मा से बड़ा नहीं हो सकता. वो सच है परमात्मा. उसके अलावा कुछ भी हुआ हमारे अगल बगल आसपास, जिसकी वजह से हमें लगे कि अरे मैं क्या कर रही हूँ, हमें अपने पे डाउट आ जाए, हमें परेशान हो जाए, कुछ भी, लेकिन तब भी we don't need to lose that trust, that hope in that consciousness. We must trust. It's like
दैट डिवाइन, दैट इट्स लाइक दैट मदर एंड फादर, वो जो कभी भी आपका हाथ नहीं छोड़, दे आर ऑलवेज देयर फॉर यू। सिमिलरली वो परमात्मा हमेशा है आपके साथ, ये विश्वास रखिएगा। कभी ऐसा लगे कि रास्ता कठिन हो गया है तो नहीं। मुझे याद है, ये स्टोरी मुझे बहुत पसंद है। जब मैंने प्राणिक हीलिंग सीखी थी, जब मैं अपनी फर्स्ट मेंटर दुर्गा बांका क्या जाती थी, तो उनके अलमीरा में ये पोस्टर लगा हुआ था। मैंने फर्स्ट टाइम उन्हीं क्या पढ़ी थी कि एक आदमी होता है और वो परमात्मा से पूछता है, मुझे कैसे पता चले कि आप हो मेरे साथ। तो परमात्मा बोलते हैं, बोलो बताओ कैसे तुम चाहते हो कि तुम्हें लगे कि मैं हूं। तो वो आदमी बहुत सोचता है, तो बोलता है, अच्छा ठीक है, ऐसा करते हैं कि जब भी मैं चलूं तो मेरे पाँव के 2 निशान और आपके पाँव के 2 निशान हमको दिखे, तो मुझे लगेगा कि आप मेरे साथ हो। परमात्मा बोलते हैं ठीक है। तो आदमी भी बड़ा खुश हो जाता है, उसे लगता है अरे वाह, जब भी चलता है तो बगल में उसके 2 पाँव और चलते हैं, और उसे बड़ी खुशी होती है कि परमात्मा है। फिर कुछ हाथ होता है उसकी लाइफ में, कुछ चैलेंजेस आ जाते हैं, परेशान हो जाता है बेचारा वो, और देखता है कि जब वो चैलेंज आए तो सिर्फ एक ही पैर के निशान दिख रहे हैं उसे, दूसरे पैर के निशान ही नहीं है। तो अरे उससे भगवान कहाँ चले गए, क्या मुझे छोड़ दिया उसको, उन्हें मेरी चिंता नहीं, मुझे भूल गए। मन में डाउट आता है। वो चैलेंज उसकी लाइफ में खत्म होता है तो देखते हैं चीजें ठीक होती है, फिर से दोनों पैर दिखने लगते हैं। तो जब भी अपनी लाइफ में उस पैटर्न को देखता है वो, कि जब चीजें ठीक होती हैं तब तो चारों पैरों के निशान होते हैं, जब चीजें ठीक नहीं होती हैं, चाहे वो कभी बीमार हो या कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ गया, कोई रिलेशनशिप आ गए हो, और तब 2 ही पैर के निशान होते हैं, 4 पैर के नहीं होते हैं। तो फिर एक दिन जब चीजें ठीक होती हैं, वापस जब चारों पैरों के निशान आते हैं, तो आदमी भगवान से बोलता है कि ये बात मुझे आपकी अच्छी नहीं लगती। परमात्मा बोले क्या? बोले जब भी मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है तब तो आप चले जाते हैं, जब कुछ अच्छा ठीक हो जाता है तब आप आते हो। तो परमात्मा बोलते हैं कि तब मैं जाता नहीं हूँ, तब मैं तुम्हें गोदी में उठा के चल रहा हूँ। एंड आई फ्रेंड टेल यू, व्हेन आई रेड दैट स्टोरी, इट्स स्टिल आई कैन रिमेम्बर टिल नाउ। तो जब भी मेरी लाइफ में चैलेंजेस आए, तो मे बी दैट व्हाट आई से, दैट माय इनर वॉइस, वो मुझे हमेशा बोलती थी कि अभी मैं परमात्मा की गोदी में हूँ, वो मुझे गोदी में उठा के चल रहा है। आई कीप ऑन रिमाइंडिंग माई सेल्फ दैट। मेहनत लगती है उस वक्त अपने मन से लड़ने के लिए, अपने मन को समझाने के लिए। मन बहुत स्ट्रांग है हमारा, माइंड इज वेरी स्ट्रांग, इट इज वेरी मच कनेक्टेड टू दिस मैट्रिक्स, बहुत स्ट्रांग है हमारा। हमको इसको लड़ने के लिए बहुत मेहनत, बहुत मेहनत। एटलीस्ट मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, मुझे बाकी का नहीं पता, आई एम टेलिंग यू माय एक्सपीरियंस। उन बिलीफ सिस्टम्स को तोड़ने का, उन धारणाओं को तोड़ने का, उन वुंड्स को भरने का, वो माफी देने का। चाहे किसी को माफी देनी थी तो मुझे 2 साल लग गए, 2 साल लग गया मुझे एक व्यक्ति को माफ करने, 2 साल तक करती रही, 2 साल बाद जाके कर पाई एक व्यक्ति को माफ, लेकिन करती रही। तो मेरी जिंदगी में मैंने बस यही सीखा जो मैंने आपसे शेयर किया, कि कभी भी डोंट लूज होप। जब भी आपको लगे आप अकेले हो तो समझ जाइए कि परमात्मा आपको गोदी में लेके ही चलते। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर लिसनिंग, थैंक यू सो मच। हमारे साथ जुड़े रहिए, जॉइन अस फॉर द बुद्ध पूर्णिमा सेलिब्रेशन ऑन 5th May फ्रॉम 9 PM to 12 AM। हम लोग सब मिलके एक साथ ध्यान भी करेंगे, इस यात्रा को भी देखेंगे, और सब एक साथ मिलकर लेट्स ग्रो टुगेदर, लेट्स वर्क टुगेदर। थैंक यू सो मच एंड वी लव यू। थैंक यू, थैंक यू।